Hello, hello, hello. Good afternoon. Welcome to the family show. I'm your host, Amjad Ali, and today it's about live and exclusive game between the Titans. This is the clash of the big teams, Australia versus England. And the news from the center is that Australian skipper, the new look Australian skipper, has won the toss, and Stephen Smith has opted to have a bowl first. So should be a good contest between both the sides. And this is going to be the first time in the Champions Trophy that Qazafi Stadium Lahore will be hosting this beautiful new look and renovated ground. And the ambience is pretty good. The outfield is lush green. It's very good on the eyes. It sounds pretty good. A large number of people have come to the ground, and it is expected that as the day progresses, by the evening there'll be more people rushing to the ground. So both the teams are there in the middle, and Stephen Smith is marshalling his troops. Both the openers from England are right there in the middle, and they are pumped up. And it's a new look at of both the teams. And have a look at the aerial view of the ground. It looks so cool, so gorgeous that one falls in love with this kind of ground. Because in Pakistan, if we see the cricket action taking place, will be mighty pleased, because it's the only game that the people of Pakistan really love from the bottom of their hearts. But let's not discuss about our team and the cricket board, because the people would normally be coming very hard on these two things. So Ben Duckett is there, so he holds the key, and Philip with him. Now these two guys will be very crucial for both for the England team and their spectators. Philip Salt and Ben Duckett, the I mean new look opening pair of England, and the Aussies are also ready. My opinion, if you're going to be asking, it's a very good decision to opt to bowl first, because it doesn't seem as if there is going to be much support for the bowlers in the second half. As far as the weather is concerned, it's pretty cool out there, around 22 degrees, and the breeze is also blowing here. And the best part is that this is a belter. There's almost no green grass over here, and it's a flat track. It should support the batters pretty much. And importantly, when we talk about the square boundaries, they are in the mid 60s. And when it comes to downtown, straight down the ground, it will be around 74 meters. So pretty much an ideal one day and even T20 white ball game. In simpler words, it's a wonderful thing. When we talk about the Australian playing 11, this is going to be a wonderful contest between both the sides are balanced. Perhaps advantage England. England will, in my opinion, England are favorites to win this game, because Australia have got pretty weaker when it comes to their bowling. The trio is not there. No Hazelwood, no Pat Cummins, and no Mitchell Stark. So this is going to hurt the Australians' cause. But nonetheless, they're a professional side. Whatever they have, they'll be utilizing their resources pretty well. So let's move to the comments corner first. Hello, RP. Hello, my dear. Oh, straight away some movement. Oh, beautiful movement straight away for Spencer Johnson. Pace machine is there. Hello RP, कैसे हैं? Good afternoon. England win करेगा 100%. मेरे को भी ऐसे लगता है. Hello, वालेकुम अस्सलाम. Sajid, कैसे हो? My son, how's everything? Lovely to see two people out there. So straight away some movement for the bowler, generating some pace, and then bounce was a little low. Maybe it was a loosener, so we may just experience something good as the day progresses. Talking about the playing 11, this is going to be crackerjack. Australian 11 comprises of Matthew Shaw, Travis Head, Stephen Smith, the skipper, Marnus Labuschagne, Josh Inglis, Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Warshuss, Nathan Ellis, Adam Zampa, and Spencer Johnson. If you ask me, it's a very balanced side, but not as balanced as it could have been, with the likes of other important key players who are not in their side. They have opted out somehow. Maybe I would have loved to have the new all-rounder, who looked pretty promising, even versus India in the BGT that took place in Australia last month. I think he was very good, and maybe he'll be part of their team as the time progresses. Looks like a wonderful all-rounder, Bo Webster.
Talking about the England playing 11, Philip Salt, Ben Duckett, Jamie Smith, Joe Root, Harry Brook, Joss Butler, Liam Livingston, Bryden Cars, Jofra Archer, Adil Rashid, and Mark Wood. So, as far as the pace is concerned, it's a very decent pace. When you look at Mark Wood, he'll generate 150 clicks. While Jofra Archer, he can be a bowler who can be devastating both ways. Double-edged weapon. He may leak plenty of runs because he bowls too many short deliveries. And on this surface in Pakistan, the pace is not going to help him much. 140s, mid 40s pace, not that intimidating or threatening. So for England, Mark Wood will be very instrumental, pivotal role he has got. And then Adil Rashid would always be the threatening bowler for them. Uh, Knowing that Liam Livingston is the one who can be very handy with the ball as well as the bat. So is the case with Joe Root. So spin plus pace, they've got very balanced side as far as England is concerned. Australia, they also have some wonderful people with them, but they lack the experience. This is the problem that Australia have, both in the batting and in the bowling as well. So best of luck, would say, to both the teams, and perhaps advantage England in this game. Surface is pretty good, and it is very much conducive for the batting. And let's see what happens. This is over number one, and England are two without loss, and this is over number one. Australia have won the toss, and they have opted to bowl first. So yesterday it was a heartbreak that Afghanistan, my favorites, in that particular game, they lost against South Africa. That's a beautiful punch down the ground. No need to run for that. Beautifully played, past the bowler, past the feeder at mid off, and past the umpire. So signaled by the umpire as a boundary, and it shows the Raza from Pakistan, one of the most experienced umpires, more than 15 years of international umpiring, and he's very cool. Beautifully played right from the mid of the bat, and Phillips would get plenty of confidence after having hit that stroke. Johnson is ready to bowl once again. Six without loss are England. Philip Salt have scored, the one scoring shot, and he has got a boundary for that. Two extras are included in this. Two slippers, and this time bottom hand. Oh, beautifully connected, all the way over wide long on for a six. That's some batting. He gets going. Salt, adding some salt to the wounds of Spencer Johnson. Yes, Johnson is the one who's very nippy, but I think that was not a good line. Not a good line at all. In the arc and very well dispatched. A couple of feet out of the crease, and the ball goes out of the park. Six. Beautifully played. Beautifully played. 83 meters long six by Phillips. This should help him a lot. This should help him a lot. Philip Salt. So end of the over, dozen runs of the first over bowled by the Aussie pacer Spencer Johnson. And now comes Dwarshuis. He's a decent all-rounder, and he can be handy. Ben Dwarshuis, 30 years of age. He's a left-arm, fast medium bowler. So is the case with Spencer Johnson. So two lefties as pacers utilized by Smith and company. Here comes Dwarshuis with two slips. Bowls to Duckett. Duckett's cuts it towards point, slight misfielding, but he's not gonna run for that. I think very good, very good, very sensible on part of the batter, because it could have been dangerous for him. So England versus Australia should be a good game. Should be cracker of a game. Australia have got some wonderful batters, and then the bowlers as well. So should be a lovely contest. And if you're gonna be asking about the advantage, I think England have the upper hand in this game. Here we go. Joshua once again ready to bowl. Streaming in onto the pads, flicked towards square leg, and it is a dot ball. Good fielding. 1.2 overs, 12 England without loss. Duckett yet to get off to the mark, yet to open his account. Just two fielders are outside the 30-yard circle, so plenty of places and spaces available to hit the ball. Just you have got to clear the infield of 30 yards. That's it. That's going to be the key. Ben Duckett ready to face. Very heavy bat. Very heavy bat in his hands. Beautiful bat. Wonderful blade. This time plays towards mid on and fetches a single.
little wide of mid on, and mid wicket fielder comes in, and by the time he throws the ball back, it's a single. So 1 run, and off the mark is Duckett. 13 England. 1 point throwers have been bowled, and having a look at the pitch, it's a pretty flat, and a batting paradise strip. Philip Salt looking pretty good. England versus Australia. So first big game of this event thus far. Two big teams, very much familiar with each other, have got very old rivalry, the oldest rivalry in the history of cricket. England versus Australia. Ashes, the most famous Ashes since 19th century. Little up pitch. Would this be taken? What a blinder! That's a peach of a catch. What a catch! You can't believe it. Oh, Philip Salt couldn't connect it with the middle of the bat. Oh, what a catch. Catches win matches. That was a blinder. Trust me, that was a catch of the match. Maybe one of the catches of the tournament. Beautiful catch. This is the wicket of the fielder, I believe, because that was onto the leg stump, wonderfully flicked, and here he goes, jumps in the air and fetches with one hand. Beautiful. What a catch. Look at the wicket, look at the bowler. He was jubilant. Went all the way to the fielder to give him a hug and pat on the back. Beautiful catch by Alex Carey, their keeper. Normally he's the keeper, but today he was placed at mid on. Beautiful catch. 13 for 1 England. That's a big wicket. Very big wicket. Philip Salt dismissed just for 10 of the bowling of Dwarshuas. So first wicket taken by Australia. So next up, very early in, and the batter is just ready to come in. He wasn't too sure whether he has to arrive this early in this game. Jamie Smith, the new look England team's one down batter, fairly inexperienced. Duckett and Smith out there in the middle for England. 13 for 1. So successful over thus far. Ben Dwarshuis success strikes for Australia. Yeah, first wicket, first blood drawn here, and Dwarshuis very lucky because it was not properly middled by the batter. अच्छा नहीं middle किया. Should have hit it even firmly. Should have gone a little more aerial. He just scooped it to the fielder, and I think that's one of the most beautiful catches that have been taken in this ICC event. Wonderful catch, wonderful. All the time he kept his eyes on the ball, and he plucked a wonderful catch. Beautiful catch, lovely on eyes. बहुत ही खुशी हुई देखकर. Alex Carey, normally he keeps for Australia, but today he was placed on mid-on, very crucial fielding position. And first wicket down, and Australia would be mighty pleased with this. 13 for 1 England. Smith has newly arrived. He'll be facing the first ball. Ben Dwarshuis into his second over. 1 for 1 his figures. Here he comes. Drive towards extra cover, and it was not that good delivery. Fantastic catch by Carey, no doubt about that. Catches win matches, and this wicket belongs to the fielder. Beautifully taken. He flew in there with precision. That was precision. Oh, beautiful catch. That's athleticism at its best. That's professionalism. That's how to take catches. The Pakistani fielders should, watch this many a times. That's a glorious cover drive. Beautiful shot. All the way to the boundary. Wonderfully played. Beautiful shot. Wow. Oh, some bhangra, some dance by the Pakistani crowd. Beautiful to see. So off the mark with a cracking drive, J.V. Smith. Beautiful shot. Hello, Prince. Hello, my dear. Prince wa. Kaise ho, Prince wa? Ka baat hai. Ka lovely drive mara hai Smith ne. Off the mark with a boundary. Delightful shot, really. 2 overs, 17 for 1. So finally, the successful over comes to the end. Duckett is there on 1. 4 for Smith. Both have scored just the one scoring shot. So Philip Salt gone in the last over. 6 balls, 10 runs for him. Both were the scoring shots, were the boundaries. A 6 and a 4. And here you go. Alex Carey removes him. Beautiful catch. Lovely catch. Blinder. Here comes the bowler, Spencer Johnson. Beautiful delivery. Outside the off stump. Shaping it nicely. And the bowler plays it towards extra cover. And it is a dot ball.
Third over in progress, 17 for 1. Or England, and Alex Carey is very, very happy. I think he's looking at the big screen in the ground and he's very happy about it. That the way he held the catch, beautiful catch, everything right about it. Wonderful jump, beautifully fetched. And the England spectator was not happy. He thought maybe England is winning. 100% England is winning. This time, very good delivery. He brought it in. That's a lovely, lovely in swinging delivery. A bit of a in dipper kind of a delivery that swung nicely in the air. And after pitching, even got some movement. It's a new ball. It's likely to happen. नया बॉल है घूमेगा यहाँ वहां दाएं बाएं और 17 पर एक आउट है इंग्लैंड का थोड़ा बहुत ट्रबल आ गया है क्योंकि अग्रेसर था फिलिप नहीं चल रहा कुछ अरसे से दैट्स अ big concern for the England side because Philip Salt is the one who really goes very hard at the bowlers. Luck not going his way, perhaps. Could have done better than that, though. This time flick towards square leg and he sprints for a single and looking for the second run. This could be dangerous. But lovely running. Beautiful running between the wicket. 2 runs for Duckett, 3 for him, 4 for Smith, who is at the non-striker, and 19 for 1. England, this is over number 3. नो नॉट लंच डन आज मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था बाहर लवली लवली निहारी मजा आ गया आज मजा नहीं लाया बहुत जबरदस्त निहारी खाई चने भी खाए साथ में और मस्त दिल कर रहा था कि फूड व्लॉगिंग शुरू करूं लेकिन अभी टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम हेलो हेलो तन्मेश नमस्कार कैसे हो गुड आफ्टरनून ओए वाज लुकिंग टू हिट इट डाउन द ग्राउंड नॉट एबल टू मिडल इट bat tilted in his hands and the ball comes towards mid on region it's a dot ball. What changes are you looking for in Pakistan squad at the tomorrow game? all the 15 changed. That's the only way out we can win against India. Otherwise, it's just a dream which will never come true. ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में बाहर करो नॉकआउट में डेंजर हो जाता है नॉट रियली ऑस्ट्रेलिया उस तरह का नहीं है ये शेवर मुर्गी के चूजे लग रहे हैं तो इतने हार्मफुल नहीं होंगे वंस अगेन ही इज नॉट एबल टू टाइम द बॉल वेल is struggling. Ben Duckett. He was looking to go for the off drive and bat, shaking in his hand, and the ball comes toward mid-wicket region, inside half of the bat. So a single for him nonetheless. 20 for 1 England over number 3 in progress. मैंने दाल चावल एंड आलू बैगन की सब्जी खाई अरे वाह बढ़िया मेरे को बहुत मस्त लगती है सब्जी आलू तो हमेशा ही एकदम झकास होता है पेसर सब सेम रहेंगे और वी कैन सी समवन एल्स I think Fahim Ashraf, His Excellency Sir Rana Muhammad Fahim Ashraf Sahab will be, he may just be included in place of Haris Rauf, maybe. Mera hunch, I'm not sure because we haven't got plenty of people to replace. Maybe we may just see Saud Shakil being replaced by Kamran Ghulam. Maybe I'm not sure, but मेरे को लगता नहीं है मेरे को ऐसा तो नहीं लगता आप ऐसा कैसा होगा सॉरी आज मेरे घर आलू की पूड़ी और खीर बना खाओ खाओ मजे करो हम तो जलेंगे डोंट वरी तन्मेश इंग्लैंड जीत जाएगा आज 300 प्लस करेगा वेल ये तो अभी इट्स ओनली द मैटर ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनल साइड है इतनी आसानी से नहीं हार मानेगी इंग्लैंड का चांस है दैट्स व्हाट आई विल से आई विल स्टैंड बाय इंग्लैंड साइड दो देयर performance with the white ball is not that heartening. It's not that cool as it used to be. But maybe you will see different kind of England this time around. Oh, beautifully played, wonderfully punched towards square leg for a boundary. Beautiful shot. Little erroneous was Dwarshuas and wonderful pickup shot, a boundary for Duckett. This should give him a lot of confidence because it was there to be hit. On the pads, he'll hit you all day long if you're going to bowl that poor line. And very well dealt with by the batter. One bounce over the rope and the crowd is very happy. खुश दिल को बहुत शुक्रिया बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम थैंक यू फहीम अशरफ तैयब को रिप्लेस क्या सकता है बाकी हारिस अगर फिट होगा तो खेलेगा don't know I mean once again bad ball it could have also been dispatched to the boundary misses the batter but it's down the leg side way down the leg side and wide signaled by the umpire 5 wides so virtually 1 ball 9 runs given away by Dwarshuas, whose last over was phenomenal. So 5 runs and a wicket in that over. And now in this over, he has given away 9 runs of just the one delivery, legal delivery that he has bowled. खुशी तो खेल रहा कल हाँ खुशी तो खेलेगा जाहिर है दाल चावल go to meal
along with any vegetable, but I can eat any time. ओह चने मुझे तो सब्जी दाल आई लव इट ऑलवेज, हर वक्त मुझे खिलाते रहो, आई बी मोर देन हैप्पी। मुझे जमीन से उगी हुई चीजें बहुत पसंद है, सारी वेजिटेबल्स, कद्दू हो, बैगन हो, एनीथिंग, इवन मूली का भी हो, गोभी, आई लव ईटिंग देम। ओ ब्यूटीफुल बॉल, this was an angling delivery, beautifully bowled down. What a comeback delivery. And Dwarshuis, I would say, is very unlucky. Inside edge, and the ball hits the pads instead of hitting the stumps. So sometimes, they hit the stumps bullseye, and sometimes they hit, the part of the body, and that's how it happens. So one of the most beautiful catches taken when it was from Philip from New Zealand, who took a blinder of Rizwan against Pakistan. And in this game, beautiful catch by Carey. बस 2:30 बोला। ओके, दाल चावल और कब, क्या बात है। ग्रेट प्रिंस, आलू टमाटर सब्जी एंड पूरी एंड और साथ में खीर, मंगल को खाता हूं मैं, क्या बात है। आलू टमाटर और पूड़ी, आय हाय, गुड चॉइस, क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मटर वाले चावल हो, मटर वाले, साथ में अचार हो, ओहो हो, मैं तो कहता हूँ छोड़ो कमेंट्री, आज तो फूड व्लॉगिंग पे बात करते हैं, मस्त खाना होता है। मैं अक्सर इंडिया के फूड व्लॉगिंग देखता हूँ, पाकिस्तान की भी देखता हूँ, बहुत मजा आता है। ये बहन स्टफ जो होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये थोड़ी जो ऐसी महिलाएं जो अपने बल पर करती हैं, गो टू द मार्केट, वहां पर जाकर दुकान लगाती हैं, रेडी लगाती हैं, दे गॉट टू बी सल्यूटेड। बहुत मजा आता है उन लोगों को देखकर, जिस तरह से वो लोग अपना आत्मसम्मान है उन लोगों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक है कि वो सेल्फ के ऊपर अपने वो रखते हैं कि दे कैन डू ऑन देयर ओन, रादर देन expecting someone else, depending on someone. They are self dependent, so this is something great about them. They're good, they for themselves are the entrepreneurs, and you got to salute them. बिल्कुल पूरा स्टेज सेट है। हाय हाय हाय, क्या बात है। हेलो अजान मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। माजरत, आपने कल मैसेज किया था पर मैं आ नहीं सकता था, और वीलॉग दिल खोलकर खाना भी देते हैं। हाँ, मैं तो वीलॉग करने जा रहा हूँ, फूड का वीलॉग बहुत जल्दी हम मस्त करने जा रहे हैं, मैं और तालिब करेंगे। हो सकता है सभी को भी हम साथ में लेकर के जाएं। कल पाकिस्तान को कितना चांस देंगे हम जी, 70 इंडिया 30 पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आपने दिए हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं 100% पाकिस्तान को चाहूंगा जीते, लेकिन मैंने जैसे कल कहा था, इफ द पीपल रिमेंबर, मैंने कहा था मेरा दिल कहता है कि अफगानिस्तान जीते, पर मेरा दिमाग कुछ और कहता है। मुझे लगता नहीं है कि आज अफगानिस्तान कुछ करेगा। मैंने बहुत थोड़ी कल कमेंट्री की थी, रीजन फॉर दैट वाज अफगानिस्तान कुछ इतना प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा था, और द सेम थिंग हैपेंड, सेम इज विद पाकिस्तान। देखो, अगर पाकिस्तान कल बैटिंग करता है और 320 प्लस बनाता है, देन पाकिस्तान कैन स्टैंड अ चांस। इफ पाकिस्तान बैट सेकंड, तो इंडिया को कोई मिरेकल होगा, 200 225 तक इंडिया आउट हो, विच इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं है हमारे पास। जैसे तन्मेश ने कल कहा था कि ओनली चांस दैट वी हैव इज समथिंग, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो पाकिस्तान अगर बॉलिंग करता है और इंडिया 200 225 पर आउट हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि चांस है, हालांकि फिर भी प्रेशर होगा। अदरवाइज इनके अलावा कुछ सिचुएशन है तो आई डोंट सी पाकिस्तान गेटिंग ओवर द लाइन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले कि हम ऐसे फलसफे बना लें, ऐसे तस्वीर कशी करें, ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। झूठी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सपोर्ट तो पाकिस्तान की टीम को करना है, वो तो कुछ भी हो जाए, मरते दम तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन अक्ल के साथ। पागल नहीं है, घास नहीं खाते। छोड़िए सर, एक मैच में जिंदगी खत्म नहीं होगी, जो अच्छा खेलेगा। नहीं तन्मेश, मुझे वो नहीं है, हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम, बट आप जब सेंसलेस हो जाते हैं, जब आपके ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर दिमाग से ज्यादा कचरा भरा होता है, तब आपको दुख होता है। आप देखें, पूरी दुनिया के बोर्ड्स उठाकर देखें, सभी के सभी स्पिनर्स को लेकर जा रहे हैं। दुबई में आप देखें, स्पिनर्स जा रहे हैं। आप पाकिस्तान को देखें, वाइड टीम है। बांग्लादेश हमसे बेहतर है यार, अगर उनका बॉलिंग है, उनकी लिमिटेशन अपनी जगह पर है।
लेकिन उनका बॉलिंग लाइनअप का जो उन्होंने फॉर्मेशन बनाया, दैट इज फार बेटर देन अस। और जो कल जिस तरह हृदय ने खेला नीचे, सैल्यूट टू हिम, बहुत अच्छा खेला यार, वेरी वेल प्लेड, लव्ड हिज परफॉर्मेंस। और वैसे भी मेरी टीम क्या है, तीन लोग मेरे थे, तीनों अच्छा खेले, शामी, फाइफर, शुभमन गिल ओडिया नंबर वन बैटर, सेंचुरी अनबीटन, एंड हृदय का भी सेंचुरी। वाह, लव यू अमजद, क्या बात है, पैट ऑन द बैक। सही टाइम पर तो बोर्ड पास कर गया। हेलो तीर्थंकर, नमस्कार, कैसे हो? तुम्हारा नाम देखो तीर्थंकर, किसी और ने सही लिया, उन्होंने लिया, हमने लिया। जॉन का बेटा अच्छा बॉलिंग कर रहा है। हाँ, कल सीबीएसई का फिजिक्स पेपर ने ले ले 12th बोर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट क्या। हेलो डॉक्टर, लव यू डॉक्टर अमृतांशी शेखर, दिल्ली से है भाई। इस लड़के को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलना चाहिए और बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए, बहुत सारा शाउट आउट मिलना चाहिए। यस अमृतांशु से, बांग्लादेश ने 40-45 बनाया होता ना, बांग्लादेश मैच विन था। नहीं अजान, इंडिया ने प्लान करके खेला गेम, तो उनको इतना वो थ्रेटनिंग नहीं था स्कोर। लेस देन 5 इज ऑलवेज हैंडी, यू नो। ठीक है, दुबई में ही सही, लेकिन फिर भी ओके। स्टूडेंट क्या हुआ है, कल इतना मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं पता। सीबीएसई फिजिक्स के पेपर में, इफ पाकिस्तान प्ले आउट ऑफ द स्किन, इंडिया प्ले बिलो एवरेज, देन पाक कैन विन, अदरवाइज एवरेज क्रिकेट खेल के इंडिया जीत जाएगी। एग्रीड, बिल्कुल धर्मेश, आपने सही कहा। आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ यू नो, वो जिसको कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट में, कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो कुछ करेंगे, बट आई डोंट फैंसी एनी चांसेस। हाँ, मेरा नाम ही ऐसा है, नाम तो बढ़िया है तीर्थंकर। कुछ लोग तो आपको मिस्टर पॉल बोलते हैं, मुश्किल लगता है शायद में। भाई आईटी स्क्रीनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन उल्टा करके बोर्ड में दे दिया। भाई बहुत हैवी लग गया। लेट्स सी, इजी कॉपी चेक होगी, गॉड ब्लेस। मुझे लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लगा था इंडिया पे। नॉट रियली, कहाँ पे प्रेशर था? शुभमन गिल आधी आधी क्रीज में निकल कर मार रहा था यार, तो कहाँ पे प्रेशर था? हिटमैन ने इतना बुरा उनको फेंटा है, प्रेशर तो था ही नहीं, सारा प्रेशर तो रिलीज हो गया था शुरू में ही। 41 करके गया हिटमैन, अनबीटन सेंचुरी मारी है शुभमन गिल ने, टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया। चिल याशी मारो, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। गिल एंड शामी परफॉर्म नॉट नो ड्यू इन दुबई, बैटिंग फर्स्ट विल बी गुड चॉइस। थैंक यू तन्मेश। देखो मेरे को मालूम था हृदय का, मुझे लोगों ने बोला तुम हृदय को क्यों लिया, मैंने कहा यार मुझे को लगता है कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, सो आई एम हैप्पी अबाउट माय चॉइस। व्हाई, हेलो शुभम, व्हाई आईसीसी कॉलिंग द इवेंट चैंपियंस टूर्नामेंट, देयर इज अ बांग्लादेश आल्सो प्रेजेंट। शुभम के पास कोई ना कोई चुटकुला ना हो, दैट्स अनदर गुड पंच। लेकिन यार क्यों उनको बेचारों का दिल दुखाते हो यार। मेरा 27 का बैंक एग्जाम है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, विश यू लक। इंडिया का बड़ा ने प्रेडिक्शन की, कुछ बोला है बारिश, कैसे हो? ये है इस बार जो भी पाकिस्तान ही जीतेगा, इंडिया के बाबा ने ओके, अच्छा किया, आप आधे फेल कर जाए, फिर तुम बैंक मैनेजर बनोगे, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, थोड़ा सा मुझे बता देना लोन कैसे मिलेगा, कोई प्रेशर नहीं था। 10 ओवर 6-9 मैंने बोल दिया तीर्थंकर भाई, 240 चेज कर रहे हैं, ज्यादा विकेट से जीत कर रन रेट भी इंक्रीज करना है। हर जगह बैस बॉल नहीं, 4 विकेट से जीत रहे हैं, तो 6 से जीते हैं, गुड सर। पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, कर आ रहे हैं। अरे वाह, पिट्ठू गरम खेला है लड़का, क्या बात है। अरे बचपन याद दिला दिया यार, बहुत मजा आता था, क्या मारते थे एक दूसरे को यार पिट्ठू गरम में। क्या हुआ, जीते हारे? हारे, इंडिया का टॉप 3 में से कोई भी एक ठीक गया तो सीधी लगा देगा। यू आर राइट, मुझे तो लगता है टॉप 5 में से 3 जरूर खेलेंगे आपके। थैंक्स डॉक्टर। गॉन, ओ गॉन इमामुल हक। कौन है अमजद जी? इमामुल हक, इंजमामुल हक के भतीजे हैं सगे। एक तरफ से वीजा ऑफ टिकट रेडी होगा, इधर लोन अप्रूव हुआ, और उधर मैंने कल्टीवेट। ये लोग कैसे खेलते हैं, विकेट थ्रो कर रहे हैं सर, पाकिस्तान टीम को फुल फॉर्म से प्रैक्टिस कर रही है। देखो अच्छी बात है, 43 for 2, 1 down gone, Jamie also departs। That's a bad very bad news for England's followers, their fans, they won't love it। Ben Dwarshuis strikes again and again Carey. Can you believe it? So this combination is doing wonders for the Aussies. So Dwarshuis removes now Smith. 15 of 13. So England are 43 for 2. Run rate is pretty handy. 8.06. That's where you've got to learn. KR wicket गिर रहा है, no problem. At least they are maintaining very sound run rate. That's great.
जो नया लड़का आया फखर जमान की जगह, जी वही है, लड़का नहीं है यार, बहुत बड़ा है भाई। अब आई एम कैप्टन N13 गेम्स। अरे वाह क्या बात है, कप्तान इमाम का दुबई में कैसा एवरेज है? ठीक है, ओवरऑल उसका 50 का एवरेज है, बट उसका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है, मतलब वो 80s में है उसका स्ट्राइक रेट। दिस विल बी बिट ट्रबल फॉर अस बिकॉज ही इज जस्ट लाइक रिजवान एंड बाबर, सो देन तैयब ऑल्सो। तो चार पांच लोग एक ही तरह के हैं, सऊद शकील भी उन्हीं तरह का है। तो आप जिस तरह की कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेंगे वो पुराने जमाने की, तो ये आउटडेटेड क्रिकेट है 90s की, ये आपको गेम नहीं जिताएगी इन एनी केस। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे बॉलर्स को मिरेकल कर दें और इंडिया को जल्दी आउट कर दें, वो मेरे ख्याल में सिलेबस से बाहर है, वो मुश्किल है, क्योंकि जितनी मार इनको पड़ रही है पाकिस्तान के बॉलर्स को, एंड अगेन वी आर कंसीडिंग मोर देन 300 रन इन ओडीआई, मोर देन 200 रन इन T20 गेम। दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर अस, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी का पेस अटैक नहीं रहा, स्पिनर्स हमारे पास है नहीं, जो है उनको हमने खिलाना नहीं, उखाड़ लो जिसने जो उखाड़ना है, टाटा बाय बाय, खत्म फिनिश। इमाम बहुत अच्छा प्लेयर है, हाँ अच्छा है, लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से खेल नहीं रहा। चिंता न कर टीपी, नॉमिनी है तुम्हारे ही, नाम लिखूंगा। नॉमिनी, इमाम ने अपने आप को इम्प्रूव किया। कौन सा नॉमिनी? क्या टॉस इम्पैक्ट डालेगा? मुकाबले बहुत डालेगा अजान, बहुत ज्यादा डालेगा। फॉर पाकिस्तान, दे वुड लव टू विन द टॉस एंड ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। दे विल नेवर वांट टू बैट सेकंड, वो चेस पर नहीं जाएंगे कभी भी। लेट्स सी। सवाल यह है कि एक दिन में कराची का फटा पीछे से दुबई गए, थकी हुई चैलेंजिंग विकेट में एक दो दिन में कितना अडेप्ट कर पाएंगे? वॉच आउट फॉर अर्शद राणा सर, आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर परफॉर्मेंस। बेस्ट ऑफ लक भाई, दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक है, पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। डोंट नो क्या होगा, लेकिन दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। टॉस तो मैटर करता है पाक इंडिया मैच में, हाँ करता है, लेकिन प्लेइंग कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, एंड इंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करेगा, एंड वी आर लैकिंग इट बिग टाइम। सो सनी सुनील गावस्कर द ग्रेट का मैंने बयान कल पढ़ा, मुझे बहुत दुख भी लगा, लेकिन रियलिस्टिक लगा कि उन्होंने जिस तरह से तारीफ की है कुछ प्लेयर्स की और कुछ की नहीं की है। दुख भी हुआ, लेकिन आई थिंक ही वाज थोड़ा तल्ख थे, लेकिन बात हकीकत पर कर रहे थे। विक्रांत गुप्ता बोला कि पाकिस्तान का पेस अटैक बेस्ट था जब, बिल्कुल सही कहा है विक्रांत, बहुत अच्छा बंदा है यार। इंडिया हैज बैटिंग डेप्थ, टॉप 8 मैच रनर्स, बैट एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, अग्रीड। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ स्टारडम है, आपके पास सारे के सारे मेरिट पर आए हैं लड़के, तो वो जाहिर है एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, हम वी हॉवर अराउंड बाबर बाबर एंड बाबर, और इस चीज ने हमें मरवा दिया है। 3 साल हो गए, शर्मा अगर टॉस जीत गए तो बैटिंग करेंगे पहले, लगता तो ऐसे ही है यार। अगर यस, अगर कल पाकिस्तान हारता है तो बहुत हैवी लर्निंग वाला मीम मिलेगी। हाँ पहले से तैयार होगी। सर मैंने सुना है कि इमाम बाबर के लिए प्रोटीन के डब्बे पीकर आया है। आई वांट हिटमैन टू प्ले फुल 50 ओवर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर तो गए हो भाइयों, गई भैंस पानी में। हारिस, गिल्स विजन इज वेरी क्लियर, एंजॉय द गेम, प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट। यस यू आर राइट, नहीं वो मेरिट पे बना भी लेता है, इट्स नॉट लाइक प्लेइंग एट मेरिट। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली वो प्रॉब्लम यह है कि हमने जाना है, एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है, और उसके लिए हमने निकलना है, और हमारे कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, शाम को दोबारा आते हैं और देखते हैं कि इंग्लैंड ने क्या उखाड़ा है पहली इनिंग में। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू, सी यू आफ्टर अ ब्रेक, बाय फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक टू इंग्लैंड एंड